Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the subject-verb agreement part 2. Let's start. Light board पे हम आ गए, and as I have discussed, today we are going to discuss verb. Now verb is the most important part of speech because it is linked, it is connected to so many other parts of speech. It is linked to noun, it is linked with pronoun, it is linked with adjective as we have seen in the last lecture of subject-verb agreement, and it is also linked with prepositions and so many other things as well. So this is the most important part as far as your parts of speech are concerned. So आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं verb के हवाले से, that is infinitive, bare infinitive and causative verbs. Causative verbs क्या होती हैं और bare infinitive और infinitives क्या होते हैं ये हम देखते हैं. Infinitive जो है it's a very commonly used thing. You're all familiar with it. और ये क्या होता है? That is 2 plus base form of verb. But important चीज़ जो है इसमें वो ये है कि it acts as a noun. As a noun act करता है, as a verb act नहीं करता. That is why ये जो हम आज error करने जा रहे हैं इस lecture में, they can be considered the error of verb as well as the error of noun. बहुत सारे लोग इसको noun के error में पढ़ा देते हैं और बहुत सारे लोग इसको verb के error में पढ़ा देते हैं. मैं इसको verb के error में क्यों पढ़ा रहा हूँ? इसलिए कि बुनियादी तौर पर ये verbs हैं and they should be taught in this particular chunk of our lecture series. तो ये noun के तौर पे act जरूर करता है but basically क्या होता है? Verb होता है because it is the base form of verb. जैसे हम कहते हैं to go, to work. This is called infinitive. और ये एक्ट कैसे करेगा? हम कहते हैं, मैं एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं आपके लिए. To err is human. To forgive is divine. Here, to err, it shows the name of a process, and to forgive also shows the name of a process. So, they are actually representing an action, a noun. They are not representing a verb. They are representing a noun. So they are acting as a noun and they have to with them. That is why they will be called infinitive. On the other hand, bare infinitive is the base form of verb without to. अगर हम to के बगैर base form use करेंगे तो that will be called bare infinitive. And why do we call it bare infinitive? It's very simple and that must be memorized by you, that why it is called bare infinitive. I say to go or to work.
Now these are called infinitives. And we all know that bare means uncovered. Bare means exposed. So if I remove this 2 from these two infinitives, the infinitives will become bare. ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? Bare हो जाएंगे. They will be exposed because the cover of 2 has already been removed. And because the cover has been removed, the infinitives have become bare. They have become exposed. That is why they are called bare infinitive. So all these nouns, all these verbs, I should say, that act as a noun are called infinitives or bare infinitives. Gerunds हैं, उनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. But here we are talking about the base form of verb. If the base form of verb is used with 2 and acts as a noun, it will be called infinitive. And if the base form of verb is used without 2 but acts as a noun, it will be called bare infinitive. So now I go to the next point and explain what are the causative verbs and how causative verbs and infinitives and bare infinitives are linked. So if a subject does not directly perform an action, rather it only causes an action, we use causative verbs. बहुत जगहों पे ऐसे होता है कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म खुद नहीं करता. It only causes an action. And we have read in detail in the last lecture that verb is not the doer of the action. ये हम पढ़ चुके कि verb जो है वो हर बार वो हर बार जो है वो काम करने वाला नहीं होगा. Subject is the topic of discussion. We have read this concept in detail in our last lecture of subject-verb agreement. If you have missed it, you can go back and have a look at it. So subject is not always the doer of an action. हमेशा काम करने वाले को हम subject नहीं कहते. Subject is the topic of our discussion. Sometimes it directly performs an action, but sometimes it only causes an action to happen. And if that is the case, we use causative verb. अब causative verb कौन से हैं? There are 5 actually. Let, make, help, get, and finally have or had. Now let is used for allowing something to happen. Let is used when you allow something, when the subject allows something to happen. Make is used to force something. जब आपको कोई चीज़ force करना होती है, मजबूर किसी को करना होता है, तो you use force. In the same way, help is used when you want to aid. When the subject does not actually performs an action, it aids someone in a particular job. And then get, it means
परसुएड कन्विंस करना, किसी को कायल कर लेना, और हैव और हैड होता है दैट इज यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट। अब इनकी एग्जांपल्स मैं आपको बताता जाता हूँ कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, बट बिफोर मूविंग ऑन लेट मी टेल यू कि इनके रूल्स बुनियादी तौर पर क्या हैं। लेट, मेक और हेल्प, ये तीनों जो कॉजेटिव वर्ब्स हैं all these verbs will be followed by bare infinitive। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर मैं कहूँ, आपकी टेक्स्ट की एग्जाम्पल्स ही दे देता हूँ। ऑप्शन अल्फा, you will not make me to believe that Mr. Manana mistook the cord for a pocketbook। I have deliberately omitted some part of that sentence because otherwise बहुत lengthy हो जाता। You will not, the correct sentence है जो आपकी exact book का sentence है वो है कि you will not make me believe that Mr. Manana, who is a man of worthy credence, mistook the cord for a pocketbook। तो उसको देख लीजिएगा। और दूसरी तरफ मैं कहता हूँ you will not make me believe that Mr. Manana mistook the cord for a pocketbook। So यहाँ पर हम क्या करेंगे? You will not make me to believe नहीं करेंगे। To believe is an incorrect option। You will not make me believe because he is not directly doing it. He is just forcing someone to believe, and that is why they are called causative verbs। मैं इसकी रीज़न भी अभी आपको समझा देता हूँ कि why they are called causative verbs, साथ साथ एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। If I say my dad let me watch the movie, you can clearly say, you can clearly see that our subject is my dad, but dad is not watching the movie, he is only letting me watch the movie। doer कौन है इस सारे में? the doer is actually me। Me is the doer of an action। I'm watching that movie, but my dad has only allowed me। वो खुद नहीं मूवी देख रहे लेकिन उनकी इजाज़त के बगैर मूवी देखना मुमकिन नहीं थी। He is causing that action। That is why they are called causative verb। एक और एग्जाम्पल करते हैं। My teacher
made me finish my homework. Now the homework is not finished by the teacher. Teacher नहीं उसको खत्म कह रही. I am finishing that homework, but the teacher is actually causing that action. That is why we are called we call made a causative verb. That is why it is called causative verb, because the teacher is only causing that action to happen. वो खुद directly वो काम नहीं कर रही. सबसे गड़बड़ जो है वो आप करते हो हेल्प में. अगर मैं आपसे कहूँ ऑप्शन अल्फा में कि he helped me to find a new job, और दूसरी तरफ मैं कहूँ कि बीटा ऑप्शन he helped me find a new job. तो अब आपको लगेगा कि ऑप्शन अल्फा बिल्कुल एक्यूरेट है. He helped me to find a new job because that is the most commonly used structure. help के बाद हम infinitive ही यूज़ करते हैं. बट हमने देख लिया कि इन सब के बाद हमने क्या यूज़ करना है? इन सब के बाद हमने bare infinitive यूज़ करना है, infinitive यूज़ नहीं करना. So our right option will be not option alpha, it will be option beta. So ये देखना है कि इन तीनों के बाद जो है वो हमेशा क्या होगा? इन तीनों के बाद हमेशा हम यूज़ करेंगे bare infinitive इस्तेमाल करेंगे, infinitive इस्तेमाल नहीं करेंगे. अब हम इसी की एक छोटी सी एक्सेप्शन देख लेते हैं और उसकी एग्जांपल्स भी हम देखते हैं. अच्छा जी, एक्सेप्शन ये है कि if make is used in passive voice, it will take infinitive. If make is used in passive voice, it will take infinitive and not bare infinitive. एक एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट में, वो हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन सी है. वो है जी Maron was made sit in a palanquin, और बीटा ऑप्शन होगी Maron was made to sit in a palanquin. Now we can see that here made is used in a passive voice. तो जब passive voice में आया तो हमने उसी के साथ क्या किया? हमने sit यूज़ नहीं किया, हमने bare infinitive यूज़ नहीं किया, rather we have used infinitive. So that is the core difference, that if these three verbs, if these three causative verbs are used in active voice, they will always take bare infinitive, but if make is used in passive voice, it will take infinitive and not bare infinitive. Now as far as get is concerned,
जो गेट है इसका मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप पास्ट पार्टिसिपल भी यूज कर सकते हैं गेट के साथ, और गेट के साथ आप जेरेंड भी यूज कर सकते हैं। सो गेट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, इसमें इन्फिनेटिव हम यूज नहीं करेंगे, इसमें हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे या फिर जेरेंड यूज करेंगे। अब जेरेंड नॉर्मली कब यूज किया जाता है, जेरेंड हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम कोई डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम कोई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, तो उस वक्त हम क्या यूज करते हैं, उस वक्त हम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, और अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट की सूरत में जेरेंड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं ऑप्शन अल्फा, I got my car repaired, और बीटा में कहूँ I got my car repairing. So it is understood कि ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, इसमें आप क्या करेंगे, जेरेंड इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें आप क्या यूज करेंगे, इसमें आप हमेशा यूज करेंगे रिपेयर्ड, पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं आपसे कहूं कि गेट द बॉल रोल, और यहां मैं कहूं गेट द बॉल रोलिंग, तो यहां हम क्या चूज करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव चूज नहीं करेंगे, यहां पर हम अब क्या करेंगे, इट इज अ डायरेक्ट रिक्वेस्ट, इंपैरेटिव सेंटेंस है, तो उसमें हम क्या करेंगे, गेट द बॉल रोलिंग, उसमें फिर हम जेरेंड चूज करेंगे, उसमें हम पास्ट पार्टिसिपल चूज नहीं करेंगे। सो ये तो था इसका। सो नाउ लास्ट वन है आपका हैव और हैड। इसके भी दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। आप शुरू से सुनते हैं कि हैव हैड के बाद तो हमेशा क्या लगेगा जी, हैव हैड के बाद तो थर्ड फॉर्म ही लगेगी, बट ऐसा नहीं है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमेशा इसमें गलती इसी वजह से करते हो कि शुरू से एक आपका दिमाग सेट हुआ होता है कि हैव हैड के साथ तो क्या आना है, थर्ड फॉर्म ही आनी है, बट इट इज़ नॉट द केस। हैव हैड के साथ if the doer is known, doer means जिससे रिक्वेस्ट की जा रही है, बिकॉज प्रैक्टिकली तो उसने काम करना है ना। इफ द doer is known, use their अगर डूअर मौजूद है, डूअर मालूम है, तो फिर आपने थर्ड फॉर्म नहीं यूज करनी, फिर आपने क्या यूज करना है, बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है। और अदरवाइज अगर डूअर मौजूद नहीं है, इफ डूअर इज अननोन, यूज
पास्ट। अगर डूअर मौजूद नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल, जो कि नॉर्मली हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आपके लिए लिख भी देता हूं, ही had his leave approved. He had his leave approved. उसने अपनी छुट्टी मंजूर करवा ली, लेकिन किससे करवाई है? चूंकि उसका हमें पता नहीं है तो हम क्या उसके लिए यूज करें? We are using he had his leave approved. Past participle यूज करें because the approver, the person who has actually approved it is not there. तो वो चूंकि मौजूद नहीं है तो इसलिए हम क्या करें? हम approved यूज करें। और इसी को अगर वो कहता कि जी he had the manager, अब आ गया मैनेजर, डूअर आ गया, तो अब हम यहाँ पे अप्रूव्ड नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? ही हैड द मैनेजर अप्रूव हिज, because now we have the doer, clear cut doer is mentioned. Who is approving? Obviously the manager, and because the doer of an action is present, is there, that is why we are using bare infinitive. Remember, in every case we will not use past participle after have or had. So अब इस सारे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझने के लिए कि आपको एमसीक्यूज कैसे आएंगे, आए आपको लेके चलता हूँ स्लाइड्स पे। ले मेरे बच्चों, स्क्रीन पे हम आगे और देखते हैं कि कैसे एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने। द वेरी फर्स्ट एमसीक्यू इज मिसेस जॉन्स मेड द बॉय वॉश हिज फेस। अब हम अभी पढ़ चुके कि मेक के बाद क्या आएगा? मेक के बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगा। सो कंसिडरिंग दिस रूल आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। सेकेंड, वेट लेट मी सी ही वेंट टू द डोर एंड ओपनड इट। अब यहाँ भी लेट मी सी होगा, लेट मी टू सी नहीं होगा। लेट तो बहुत कॉमन है, आप यूज़ भी करते रहते हैं, तो लेट मी सी होगा, लेट मी टू सी नहीं होगा। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट देखिए, जस्ट ओपन योर माउथ एंड लेट मी टेक अ लुक। लेट मी टेक अ लुक है, लेट मी टू टेक अ लुक नहीं है। एंड द राइट ऑप्शन एज शोन इन द स्लाइड इज ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट देखिएगा, दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड, शुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड नहीं होगा। दिस इज द मोस्ट कॉमन एरर वी मेक, बिकॉज हेल्प के साथ हम हमेशा इन्फिनिटिव यूज करते हैं, हालांकि हेल्प के साथ हमें बेयर इन्फिनिटिव यूज करना चाहिए। तो दिस लेसन शुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड नहीं होगा, दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द यूज ऑफ साइंटिफिक मैथड has changed living conditions and has improved living conditions and changed people. So a right option as shown on the screen is option Charlie. Next देखिएगा, for years Chinese have been striving to make the world realize. ठीक है, अब यहाँ भी हम क्या कह रहे हैं? make के बाद हम क्या कह रहे हैं? टू रियलाइज नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं? हम रियलाइज कर रहे हैं। रीजन, क्योंकि मेक के बाद हमने क्या यूज करना है? मेक के बाद हमने बेयर इन्फिनिटिव यूज करना है, इन्फिनिटिव यूज नहीं करना। सो द राइट ऑप्शन एज शोन ऑन द स्लाइड इज ऑप्शन चार्ली। आगे देखते हैं, गेट और हैव हैड की भी हम एग्जांपल्स अभी देखेंगे, इसको एक ट्राई करते हैं, एक और एमसीक्यू। It was not just modesty that made him say so. Made him to say so नहीं आएगा, made him say so. So our right option will be option delta. Next देखिएगा, और ये आपकी get की बड़ी perfect example है। Once I get it started, the others will help. ठीक है, अब ये डार्क देवर एंड गोल्डन आइट की लाइन है, once I get it started,
बिकॉज इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हमने पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज नहीं करना। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट भी देख लें, हैव और हैड के हवाले से मैंने आपको बताया था कि हर बार थर्ड फॉर्म यूज नहीं होगी, कभी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे अगर डूअर मेंशन्ड नहीं है, और अगर डूअर मेंशन्ड है तो फिर हम क्या करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करेंगे। He felt so weak that he was not even puzzled by the details of the business, how they had got him upstairs. ठीक है, how they had got him upstairs, वो उसे लेकर आए थे, but through whom, किसके जरिए लेकर आए थे, किससे रिक्वेस्ट उन्होंने की थी। ठीक है, तो चूंकि वो जिससे रिक्वेस्ट की, जिसके थ्रू से ऊपर लेकर आए थे, वो डोर ऑफ एन एक्शन मेंशन नहीं है, इसलिए हमारी राइट ऑप्शन क्या होगी, दैट विल बी ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट इसी में देख लें, इसी को मैंने थोड़ा अमेंड किया है, ही वॉज अमेज्ड हाउ दे हैड द स्टूडेंट्स गेट हिम अपस्टेयर्स। अब दे हैड द स्टूडेंट्स तो क्या आ गया, बिकॉज दे नो कि डूअर अब कौन है, किसके थ्रू, किसको रिक्वेस्ट करके बुलाए हैं, स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करके लाएं, तो इसलिए यहाँ पर हम गॉट हिम अपस्टेयर्स नहीं करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, हाउ दे हैड गेट हिम अपस्टेयर्स, एंड आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्ली। गुड बाय मिस्टर चिप्सी की लाइन है। और लास्ट पे मैंने आपको बताया था कि मेक या मेड हमेशा क्या होगा, अगर पैसिव वॉइस में आएगा तो ये हमेशा इन्फिनेटिव के साथ इस्तेमाल होगा, और उसकी मैंने आपको एग्जांपल भी लिखवाई भी थी, एक बार यहाँ भी कर लेते हैं कि आफ्टर द सेरेमनीज वर ओवर मैरून वॉज मेड टू सिट इन अ पैंक्विन होगा, तो सिट नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, टू सिट। सो आवर एरर विल बी सिट, एंड considering that error, our option will be option Charlie. So hopefully इन सारी चीज़ों से आपको, इन सारे MCQs से क्लियर हो गया होगा कि कॉजेटिव वर्ब्स क्या हैं और कहाँ हमने बेयर इन्फिनिटिव और पास्ट पार्टिसिपल और बाकी उनकी किस किस तरह से फॉर्मेशंस हैं और कौन कौन से रूल्स हैं जिसके थ्रू हम उसको यूज़ करेंगे। सो now we go back to the lightboard and continue the remaining part of the lecture. Ladies students, एक बार फिर हम lightboard पे आ चुके हैं, और now we are discussing some more verbs that take actually bare infinitive or gerund. I've already told you that gerund is also a noun, हम उस पे भी बाद में डिटेल से बात भी करेंगे। Firstly, talk about some more verbs that take bare infinitive. And these verbs are called verbs of perception take bare verbs of perception कौन से हैं? They are related to your perceptions, they are related to your senses, उनको हम क्या कहते हैं? They are called verbs of perception. For example, watch, look, see, feel, hear, sound, smell. All these verbs actually take bare infinitive. इन सब के बाद क्या लगेगा? bare infinitive लगेगा. And secondly, इन्हीं verbs के साथ एक और इनका भी बता दूं रूल कि all these verbs will be qualified by
adjectives, not adverbs. We all know that verbs are qualified by adverbs. They're not qualified by adjectives. But these verbs actually show the state of a person. That is why they are qualified by adjectives and not adverbs. So इन दोनों को हम देख लेते हैं. The piece of string की फिर एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ. उसमें वो कहते हैं मिस्टर मनाना the harness man saw you pick up the pocketbook. You can clearly see that here we are using pick up, not to pick up, because after all these verbs of perception, we must use bare infinitive and not the infinitive. Secondly, एक और एग्जाम्पल हम करते हैं. कहते हैं the man felt his hair flutter and the tissues of his body draw tight. डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट की लाइन है. आगे लंबी लाइन है, हम उसको छोड़ देते हैं इसलिए कि दैट इज नॉट रेलेवेंट टू अस. आगे वो कहते हैं एज इफ यू आर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ वैक्यूम. तो वी डू नॉट नीड इट ना, तो हम इतना ही लिख लेते हैं जितनी हमें ज़रूरत है. आप देख रहे हो कि द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर. हालांकि अगर पहले फेल्ट है, पास्ट है, तो होना क्या चाहिए था? वी शुड हैव सेड फ्लटर्ड, बट वी हैव यूज्ड फ्लटर. And here also we have not used drew, we have used draw. Reason? Because verbs of perception will always take bare infinitive and not anything else. एक इसमें एक्सेप्शन मौजूद है, वो देख लें. If C is used in passive voice, it takes if C is used in passive voice, it takes infinitive. इसी लाइन में, इसी लेसन में आपकी एक और एग्जाम्पल मौजूद है. मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप, है ना. यहाँ पर तो सॉ कह रहे हैं. इससे पहले वो एक लाइन कहते हैं इसी लेसन की, वो कहते हैं कि यू वर सीन this morning to pick up the pocketbook lost by Mr. James. तो यहाँ वो क्या यूज कर रहा है? यू वर सीन दिस मॉर्निंग
to pick up, because seen here is used in passive form. तो पैसिव फॉर्म में जब भी यूज होगा तो फिर इन्फिनेटिव यूज करेंगे, अदरवाइज इन सब के साथ हम क्या यूज करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे. सेकेंड रूल भी एक बार देख लेते हैं कि वो कौन से, कि ऑल दीज वर्ब्स विल बी क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव्स एंड नॉट एडवर्ब्स. हम कहते हैं Arthur looked astounded. Look के बाद हम क्या यूज कर रहे हैं? We are not using astoundingly, we are using astounded. Same is the case with another noun. हम कहते हैं Mr. Stewart sounded pleased. And you can tell that we are not using pleasingly, we are using pleased. That is the past participle used as adjective. तो ये सारे के सारे noun, because they represent a particular state of a person, that is why they are not qualified by adverbs, rather they are qualified by adjectives. And lastly, there are some more verbs that are followed by bare infinitive. वो verbs भी लिख लें इसी में ही. वो कौन से हैं? They are need not, dare not, bid or bade, rather and rather. All these verbs will also take bare infinitive. ये सब के सब मैंने एक कॉलम में लिख दिए. bare infinitive लेंगे, इनके साथ और कोई infinitive या past participle या कोई और form of verb जो है, that will not be used with them. For example, और मैं अगर किसी को कहूँ कि you need not worry, तो you need not to worry नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, you need not worry. इसी के साथ दो और भी ऐड कर लें, that is better and had better. You have seen the examples of these, better and had better. जैसे वो कहते हैं you had better leave, फर्स्ट लेसन में ही. Arthur Stewart को कहता है you had better leave, and now so many people think or read it out as you should better leave. Should better cannot be used because it is incorrect. रीज़न भी बता देता हूँ कि उसके इनकरेक्ट होने की वजह क्या है. If I say you should better leave, why it is incorrect? Because should is used for suggestion and better is also used for suggestion. तो आप डबल तो यूज नहीं करेंगे, या तो आप करेंगे you should leave or else you would say you better leave. So it is not you should or you would, it is you had better leave. इसके बाद एक और आपकी एग्जाम्पल है had better के हवाले से. वो कहते हैं कि गुड बाय मिस्टर चिप्स की लाइन है. वो कहते हैं कि it was a wanton, stirring all kinds of emotions
that had better be left untouched. had better के बाद क्या यूज कर रहा है? to be नहीं कर रहा. had better के बाद क्या कर रहा है? be यूज कर रहा है. रीजन कि bid, rather than, better, had better, need not, dare not, इन सब के बाद you must use bare infinitive and not any other form of verb. So अब इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको लेके चलता हूँ स्लाइड्स पे. Students, once again we are on the slides on the screen to solve our MCQs. The very first MCQ is they could see the laborers come pouring out of the compound. वैसे तो हमें पता है कि वर्ब के बाद वर्ब होगा तो क्या आएगा? जेरेंड आएगा. बट यहाँ पर चूंकि वर्ब ऑफ परसेप्शन है इसलिए they could see the laborer come. Coming नहीं आएगा. They could see the laborer come pouring out of the compound, pointing at the hills and shouting excitedly. So right option हमारी क्या होगी? That will be option alpha. Next देखिए, and of course you wouldn't have to watch them die. ठीक है, watch them to die नहीं आएगा because watch again it's a verb of perception. तो verb of perception के बाद क्या आना है? bare infinitive आना है. इसके बाद infinitive जो है वो हम यूज नहीं करेंगे. So our right option will be option beta. एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं. rather और rather than के हवाले से मैंने आपसे कहा था कि हम उसके बाद bare infinitive इस्तेमाल करते हैं. He could help them get. अब पहली चीज तो ये देख लें कि help them get आएगा. ठीक है, to get नहीं आएगा. He could help them get the most from their own natural way of life rather than to persuade them to adopt Western habits unsuited to their land and traditions. अब rather than to persuade नहीं होगा. rather than के बाद हमने अभी पढ़ा कि हमने क्या यूज करना है? bare infinitive यूज करना है. So our right option will be option Charlie. नेक्स्ट हमने किया था नीड नॉट, डेयर नॉट. अब ये गुड बाय मिस्टर चिप्स की लाइन है. पहले लेटिन उसको हम छोड़ते हैं और आगे देखते हैं कि आई नीड नॉट ऑफ कोर्स ट्रांसलेट. नीड नॉट ऑफ कोर्स टू ट्रांसलेट नहीं है बिकॉज नीड नॉट के बाद हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि हमने नीड नॉट के बाद bare infinitive यूज करना है, infinitive यूज नहीं करना. फिर और देख लें, इट वॉज कोल्ड एंड फॉगी and he dared not to go out नहीं होगा. dare not, need not, इसके बाद हमने भी देखा ना कि इन सब के बाद हमने क्या करना है? इन सब के बाद हमने bare infinitive यूज करना है, infinitive यूज नहीं करना. it was cold and foggy and he dared not go out होगा. so our right option will be option delta. next, I think you had better leave, Arthur said standing. ये भी हमने एग्जाम्पल्स में भी किया था. and it is you had better leave, not you would or you should, as I have already told you when we were working on the light board. So the right option here will be option delta because you had better leave आएगा. अब ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि had के साथ एक आपका माइंडसेट डेवलप हुआ होता है कि has, have, had के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आनी है. But if it is had better, then we'll not go for the past participle. We'll go for bare infinitive. So hopefully in MCQ से आपको clear हो गया होगा कि verbs of perception और जो कुछ other verbs हमने समझे थे उनके साथ हमने किस किस तरह से चीज़ों को take up करना है और कैसे उनके साथ हमने bare infinitive use करना है. So now we once again go back to the light board and complete our lecture. Thank you. नहीं मेरे बच्चों, एक बार फिर से हम लाइट बोर्ड पे आ गए एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट जेरेंड. अब जेरेंड क्या है? as I have already told you that gerund is a verb but it is used as a noun. For example, if I say he is riding a horse, so here riding it is being used as a verb, but इसी को अगर मैं ये कहूँ कि riding
is a royal sport. राइडिंग इज अ रॉयल स्पोर्ट. तो यहाँ पर क्या होगा? राइडिंग इट इज नॉट यूज्ड एज अ वर्ब, इट इज बीइंग यूज्ड एज अ नाउन. सो हियर इट विल बी कॉल्ड अ जेरेंड. सो अब हम जेरेंड को देखते हैं कि जेरेंड और वर्ब में जो है वो किस तरह से हमने एक रिलेशन कनेक्शन बिल्ड करने हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से किस तरह के एरर्स एक्चुअली हम करते हैं जो हमें अवॉइड करने हैं या पिकअप करने हैं व्हाइल डूइंग आवर एंट्री टेस्ट एग्जाम. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज if a verb is followed by a verb, the second verb will be used as gerund. कि अगर वर्ब के बाद भी वर्ब आ रहा है तो दूसरा वर्ब क्या होगा? इट मस्ट बी यूज्ड एज अ gerund. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं he likes playing hockey, so you can see that a verb is followed by an other verb. So the second verb is being used as gerund. And what is the reason for that? I can explain you the reason as well, because I always believe कि जब तक आपको रीज़न नहीं पता होगी खाली रूल से आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी. यू कैन नॉट मेमोराइज ऑल द रूल्स, यू मस्ट नो द रीज़न, द लॉजिक बिहाइंड इट. बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो एक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मेशन सेंटेंस की, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. वी नो that object is a noun. So verb के बाद primarily क्या आना चाहिए? Noun आना चाहिए. But अगर वो हमें verb के बाद भी verb दे देगा तो हम क्या करेंगे? उस verb को भी convert कर देंगे किसमें? gerund में. Because we know कि verb के बाद verb नहीं आना, verb के बाद क्या आना है? Object आना है. And if it is verb after verb, so we will convert the second verb into noun by using it as a gerund. तो ये उसकी लॉजिक है, उसकी रीज़न है कि इसलिए हम दूसरा वर्ब जो है वो gerund के तौर पर इस्तेमाल करेंगे. सेकेंड देखिएगा, आफ्टर possessive adjective we use verb only as gerund. possessive adjective के बाद भी verb क्या आएगा? gerund के तौर पर इस्तेमाल होगा. Why? We have already studied in pronoun that possessive adjective actually qualifies a noun. तो possessive adjective को किससे लिंक होना है? possessive adjective को लिंक होना है किसी न किसी noun से, किसी verb से तो वो लिंक हो ही नहीं सकता. तो जब वो किसी verb से लिंक हो ही नहीं सकता तो हम उसको क्यों verb के साथ अटैच करेंगे? अगर verb दिया भी हुआ है तो हम क्या करेंगे? उस वर्ब को कन्वर्ट कर देंगे इनटू gerund, और gerund आपको पता है कि gerund इज अ नाउन. मसलन एक एग्जांपल आपको लिख देता हूँ, गुड बाय मिस्टर चिप्स की आपने पढ़ रखी है.
It is all right. Of course, her coming to ब्रुकफील्ड। हर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद हम क्या यूज करें, जेरेंड यूज करें, क्योंकि इसके बाद क्या आना था, वर्ब नहीं आना था, इसके बाद नाउन आना था, बट उन्होंने वर्ब दे दिया। बट हम ढीठ लोग हैं, हमने अपना परनाला वहीं रखना है, हमने पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं यूज करना। सो वर्ब को नाउन बनाने का एक ही तरीका है, दैट इज टू मेक इट अ जेरेंड। एक और एग्जांपल आपकी वाई बॉयज फेल इन कॉलेज की है, वो कहते हैं they are responsible for his being here। जो वो कहते हैं ना, the boy did not ask his parents to bring him into this world, they are responsible for his being here। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, his के बाद क्या यूज कर रहा है, जेरेंड यूज कर रहा है। एक सबसे कॉमन गलती जो आप करते हो वो है उसमें गुड बाय मिस्टर चिप्सी का सेकंड चैप्टर है, उसमें वो कहते हैं द odds were heavily against his being able to move elsewhere, the odds were heavily against his being able to better himself by moving elsewhere। तो his being नॉर्मली आप क्या कर देते हो, the odds were heavily against him being able to move, him नहीं आएगा, क्या आएगा, his being able to move आएगा, his being able to better himself आएगा। सो ये आपने देख लेना है। तीसरी चीज after preposition verb can only be used as gerund। preposition के बाद भी क्या होगा, हमेशा gerund के तौर पर ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा किसी भी और शेप या फॉर्म में इस्तेमाल नहीं हो सकता। रीज़न उसकी बड़ी ऑब्वियस है, preposition is actually connects the subject and object, so it is clear that after preposition we need object, and we have studied here that object is actually a noun। तो preposition के बाद noun actually लगना है ना, so if there is a verb तो हम क्या करेंगे, हम उस verb को भी convert कर देंगे noun में by making it a gerund। For example, soon after taking charge of this office, he dismissed all old employees। तो we can clearly see that after के बाद हम क्या यूज करें, we are using gerund, because after is a preposition and after preposition we must use an object. An object is a noun, but if they have given us a verb, we will convert that verb into a noun by making it a gerund। Lastly, there are some particular verbs that always take gerund.
लास्टली कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, कुछ वर्ब फ्रेजेस कह लें ऐसी हैं कि जो टू पे ख़त्म हो रही हैं एंड देयर टू इज़ बीइंग यूज्ड एज अ प्रपोजिशन. बट नॉर्मली हमने चूँकि पढ़ा होता है, शुरू से एक हैबिट हमारा बना होता है कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है, तो वी मेक एन एरर. और वो वर्ब कौन से हैं जी? वो हैं, लिख देता हूँ आपके लिए, एडिक्ट टू, listen to, object to, fall to, take to, averse to, look forward to, with a view to, and used to. Here to is being used as a preposition, but we have a feeling right from the beginning कि to के बाद क्या लगने हैं? We use the first form of verb. But here to is not used as a part of infinitive. It is being used as a preposition. And we know from this rule that after preposition we use the gerund and not the bare infinitive or the first form of verb. और इसको क्लियर भी कर देता हूँ. ये देखें, अगर मैं आपसे ये कहूँ he is addicted to music, it is all right, बिल्कुल ठीक लगेगा आपको. क्यों ठीक लगेगा? बिकॉज आपको लग रहा है कि addicted is the verb and to is the preposition. और preposition के बाद क्या लगना है? Obviously preposition के बाद हमने क्या लगाना है? Noun. तो it is all right. कभी आप ये तो आप यहाँ पे आपको fault तो नहीं लगेगा ना? You will feel that it is an absolutely correct sentence. On the other hand, जब मैं इसको लिखूंगा ना, he is addicted to go there, और दूसरी तरफ मैं लिखूंगा he is addicted to going there. तो here you will feel कि addicted to लग गया तो to के बाद क्या आना है? First form of verb. But here to is not being used as a part of infinitive. It is being used as a preposition. और preposition के बाद हमें पता है कि हमने क्या लगाना है? Gerund. So this will not be the correct option. ये जो option alpha है ये हमारी ठीक option नहीं होगी and the right option will be option beta. So ये था जी gerund के gerund हमने कहाँ यूज़ करने and how it is linked with verb. अब इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझने के लिए MCQs की मदद से समझने के लिए आए मैं आपको लेके चलता हूँ स्लाइड्स पे. Let's students, once again we are on the slides to practice our MCQs. The very first MCQ is agriculture mechanization is being introduced with considerable caution so as to avoid upsetting the balance. अब avoid upsetting, avoid और upset ये दोनों क्या हैं? Verb हैं. And we have just learned that if a verb is followed by a verb, तो second verb क्या होगा? It will be a gerund. तो avoid के बाद दूसरा verb हम क्या use करें? Upsetting, not upset. So correct option is option delta. Next, people who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today. Enjoyed eating. Enjoy is a verb and eating is a verb. So a verb is followed by another verb. But the second verb will be used as a gerund and our correct option will be option alpha. Next देखिएगा, when they finished eating, she got up and said,
Now take this $10 and buy yourself some blue sweet shoes. Finished eating. Again, finish is a verb and eating is also a verb. So a verb is followed by another verb, and I can clearly tell you and you can clearly feel that the second verb is being used as a gerund and not as a verb. So our right option in this regard will be option delta. Next MCQ हम करते हैं, in the delirium of his death struggles, he kept claiming his innocence. Kept claiming. Again, kept as a verb and claiming is also a verb. Claim basically. तो claiming is used as a gerund. Reason बता चुका है पहले भी कि वर्ब के बाद वर्ब नहीं आना, वर्ब के बाद क्या आना है, ऑब्जेक्ट आना है, नाउन आना है. तो अगर वर्ब आया हुआ तो उस वर्ब को भी हम जेरंड बना के कन्वर्ट कर देंगे किसमें, नाउन में. सो राइट ऑप्शन इन दिस रिगार्ड विल बी ऑप्शन चार्ली. नेक्स्ट एक और एमसीक्यू है आपका स्पॉट द एरर का. what had happened was that they had missed to meet Christopher during the unfortunate 2-day tour. अब यहाँ पे missed to meet नहीं होगा, missed meeting, because missed is a verb and meet is a verb. तो एक verb के बाद दूसरा verb आएगा तो वो क्या होगा, that will be gerund. तो ये missed meeting होगा. So our correct option will be option beta. दो और examples हम देखते हैं. All the clerks had stopped to write नहीं होगा, had stopped writing, because stop भी verb है और write भी verb है, and therefore our right option will be option Charlie. Pastor suggested to collect eggs नहीं होगा, pastor suggested collecting eggs होगा, because suggest is a verb and collect is also a verb. So our right option in this MCQ will be option Charlie. I remember to go नहीं होगा, I remember going to the British Museum one day होगा. ठीक है, that is option beta. Again reason वही है, remember is a verb and go is also a verb, and if a verb is followed by another verb it will always be used as gerund. So the right option is option beta. Then I have told you that possessive adjective also takes gerund. If a verb is used after possessive adjective it will always be used as gerund, because possessive adjective के बाद हमने noun use करना होता है, verb use नहीं करना होता. तो पहला MCQ हम देखते हैं. He remembered, he said that he remembered my doing so. तो me doing so नहीं होगा, ठीक है, my doing so होगा, because my is a possessive adjective and उसके बाद हमने क्या use करना है, gerund use करना है. So our right option will be option delta. नेक्स्ट देखिए, ओवरकमिंग हिज डिसलाइक ऑफ सीइंग सफरिंग. जो हमने कहा था कि प्रपोजिशन के बाद भी क्या इस्तेमाल करेंगे, जेरंड इस्तेमाल करेंगे. ऑफ सीइंग सफरिंग होगा, ऑफ इज अ प्रपोजिशन तो उसके बाद क्या आना है, जेरंड आना है. सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्ली. नेक्स्ट देखिएगा, ऑन एज्यूमिंग पावर, ऑन एज अ प्रपोजिशन तो उसके बाद क्या करेंगे, एज्यूमिंग, जेरंड. On assuming power, Mustafa Kamal's first object was to educate the people. So right option यहाँ भी आप देख रहे हो, that is option Charlie. अब यहाँ पर जो last MCQ आप देख रहे हो spot the error का, यहाँ पर आप बहुत गड़बड़ करते हो. The governor would of course agree to you being adequately pensioned. No. बीइंग है ना, जेरंड है तो जेरंड से पहले क्या लगना है, यू नहीं लगना. जेरंड से पहले क्या लगना है, पोजेसिव एडजेक्टिव लगना है. सो यू बीइंग नहीं होगा, योर बीइंग होगा. अब सुनने में ये आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, सुनने में आपको यू बीइंग ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जेरंड से पहले हमने क्या यूज़ करना है, पोजेसिव एडजेक्टिव. और वाइस वर्सा भी उसको देख सकते हो कि पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमने क्या यूज़ करना है, जेरंड. सो आर राइट ऑप्शन हियर will be option Charlie. आगे बढ़ते हैं. कुछ verbs मैंने आपको बताए थे जिसके बाद हम यूज़ करते हैं हमेशा gerund, although कि उनके साथ to भी लगा होता है, लेकिन वो to जो है वो as a preposition यूज़ हुआ होता है. His agent ransacked the books of Alexandria and Damascus with a view to buying or copying manuscripts.
विद अ व्यू टू बाय नहीं होगा, हालांकि टू के बाद हम नॉर्मली फील करते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव लगने, बट यहाँ पर विद अ व्यू टू बाइंग और कॉपिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स होगा. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा. नेक्स्ट, Professor Claude Blangernon, a remarkable French man who had devoted himself to helping the Taurog people. आएगा, to help नहीं आएगा because devoted as a verb and to here is used as a preposition. So the right option for us will be option Charlie.